Guys, we'll start in 5 minutes. I'll just share the link everywhere so that people can join in. हाय रितेश भाई, कैसे हो? हाँ यार, लॉन्ग टाइम more or less wasn't working on the channel as much, but started doing it again. जिससे आई थिंक 3-4 व्यूअर और बढ़ जाए, 8-9 लोग हो जाए, स्टार्ट करते हैं। आप क्या कर रहे हो? हाउ इज़ योर ट्रेडिंग गोइंग? क्या कर रहे हो मार्केट में? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लोग बीच बीच में ज्वाइन करते रहेंगे, तो मैं ये स्क्रीन हटा के ऊपर कर देता हूँ। अ, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मैं बेसिकली एनालाइज करते जाऊँगा, वो हम लिखते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप एनालिसिस का हम स्टार्ट करेंगे। लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और आज रितेश भाई कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट्स और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है जो मैंने थोड़ा टाइम पहले करी है, एंड आई विल बी एडिंग टू दोज। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज ऑल्सो। एक बार ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो बेसिकली मैं हर वीक से पहले पढ़ता हूँ। तो ऑन मंडे द मार्केट विल रिएक्ट टू क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस लाइक मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, कोटक बैंक एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। रिजल्ट्स की बात करें तो मोरलेस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही टीवी पर चला, टीवी हैंग हो गया। एनीवे, सो मोरलेस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही अर्निंग्स आई थी। एंड इफ़ यू ऑल्सो गो ऑन रिलायंस चार्ट, यू सी कि रिलायंस मोरलेस साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है थोड़ा टाइम से। अगर आप एक सेकेंड रिलायंस के चार्ट पर जाते हो और हम चलो एक वीक का चार्ट खोल लेते हैं, तो इफ़ यू सी कि ये ऑलमोस्ट ये एक महीने से मोरलेस सेम रेंज में ही घूम रहा है, अपने 300-400 पॉइंट्स की। वाई इज द चार्ट नॉट लोडिंग? हाँ, सो मोरलेस ये इफ़ यू लुक एट लास्ट 12 कैंडल्स, तो इसने हाउ से 22,500 से 2,450 तक का ही मूव दिया है लास्ट 4-5 मंथ्स में। सो इतना कोई बड़ा मूव नहीं दिया है, और जो इनकी अर्निंग्स है वो भी फ्लैट आई हैं। सो आई डोंट थिंक सो more or less that is factored in Reliance, and even if there's a fall, it won't be more than 20-30 extra points. So I don't think uh, there'll be a major reaction. Another thing is, because 26th को Thursday है, which is also the monthly expiry, तो expiry होगी Wednesday को। So Tuesday FinNifty expiry, Monday Nifty and Bank Nifty expiry रहेगी monthly. So
मोर लेस 3 दिन में ही, 3 days में ही आई थिंक इस बार सारी ट्रेडिंग खत्म हो जानी इस हफ्ते की. A mixed bag of quarterly earnings, no major expectations from the union budget, so basically कोई major news नहीं है. Optimism about China's reopening markets kept range bound for the week gone by, and I think next week भी ऐसे रहेगा. More or less, China is expected to trade higher because there was a recent news concerning China in which Saudi said they might be accepting the Chinese currency yuan. So possibly you can see the Hang Seng trending again, and I feel like we can also see an upside 100 to 100 points upside in the market because Kotak Mahindra and ICICI Bank both are a little beaten down or trading flat, and their results are quite good. Um, and a lot of PSU banks have also declared results. Um Forgetting the name right now in a hurry, but these PSU banks that have declared the results have also come out great. जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लुकआउट का था, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो बैंक्स में काफ़ी बड़ी है. एंड नो मेजर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अपार्ट फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड बजाज फाइनेंस that can move the nifty. Bajaj Finance can move for nifty, and Axis Bank can move bank nifty. These are the only two major news. Other smaller banks like Canara Bank, IDBI Bank, Poonawalla Financial Corporation, PNB Housing Finance, and which else will also be Indian Bank. These PSUs will also be declaring the results. And इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आएगा वो आएगा थर्सडे को. थर्सडे की बेस्ट बात ये है कि हमारी मार्केट बंद है थर्सडे को, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आएगा यूएस का जीडीपी डेटा, so probably we'll see an impact on Friday. So I think more or less Monday, Tuesday, Wednesday, market will more or less trade sideways. In fact, if you see Nifty का entire last week का chart, तो जहाँ पे मार्केट ओपन हुई लास्ट मंडे वहीं पे लास्ट फ्राइडे क्लोज हो गई. ऑल प्राइसेस का हम बाद में आएंगे. एनी अदर थिंग दैट वी नीड टू सी, एनी पर्टिकुलर बिग डिविडेंड्स? नो. ठीक है. So we'll close the Dalal Street week ahead. This is done. Oh shit, the concurrent viewers have fallen bit to very less. ठीक है. So more or less यहाँ तक लग रहा है कि no major news till Wednesday to move. ठीक है. तो अभी तक दिख रहा है नो मेजर न्यूज़ टू मूव द मार्केट्स. देन एक बार अब हम एनालाइज कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट्स. ठीक है. तो वर्ल्ड मार्केट्स के एनालिसिस के लिए लेट्स गो टू हम स्टार्ट करेंगे कौन से इंडेक्स से. ठीक है. ओ बाय द वे, द only index trending in the entire world is this index, BIST 100. This is the index of Turkey. If इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ऑलमोस्ट ज़ीरो चल रहे हैं, तो इनकी स्टॉक मार्केट ट्रेंड करे जा रही है. तो अगर आपने लेट्स से कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस में पैसा डाला था 2020 के, लेट मी जस्ट शो यू, कहाँ गई भाई 2020 फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. तो यू वुड हैव बॉट द टर्किश मार्केट्स एट 850 रुपीज़. और अभी टर्किश मार्केट चल रही है 5490 पे. तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 800% बढ़ गया होता है लास्ट 2 साल में अगर आपने टर्किश मार्केट में इन्वेस्ट करा होता. एनीवेज, बट आई थिंक बहुत सारे लिक्विडिटी क्रंच के इश्यूज हैं टर्किश मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आई डोंट नो ऑफ एनी वे यू कैन इन्वेस्ट इन द टर्किश मार्केट्स ऑल्सो. एनीवे, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
वील स्किप नाइकी बाय द वे। जापान के बारे में एक रिसेंट न्यूज़ है, जापान ने वापस क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट करी है। बेसिकली जापानी सेंट्रल बैंक्स ने बोला है कि हम वापस मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, तो वहाँ की भी मार्केट्स बॉटम से बाउंस देने लगी हैं। नेक्स्ट कमिंग बैक टू RTSI, रशिया के इंडेक्स में कुछ हो नहीं रहा। रशियन index does not affect the Japanese any markets in the world. This Hang Seng, Hang Seng index is also what I had recommended around this time in November. Early November I had recommended when the markets were around 15-ish thousand, 14, 15,000, 16,000, and now it's 22,000. It's run up 40% since then, but it is still very far away from its highs, which I feel if it goes higher from here, it can create a lot of positive sentiment around the global markets. And that's why I'm also invested in Hang Seng. If you were to see my, I won't show you my entire portfolio, but यहाँ पे अगर आप देखो तो Hang Seng 20 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे it shows I have 350 quantity. So I have a good enough amount invested in the Hang Seng index, which I feel is a good thing to do because diversifying in current market situations is important. You can't bet all of your money on only in India and US and think your money is safe. Next thing is UK. UK markets have made a new all-time high. This is where I feel the foreign investors are selling in India and buying these markets. 10-year bond kind of hasn't done anything for a week. 30-year bond ने भी कुछ नहीं करा. 2 साल के बॉन्ड ने भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. And German markets are trying to recover from the bottoms, which they have erased most of the losses and might make an all-time high if the foreign investors keep selling in India and keep buying there. S&P closed in good green on Friday, so it gave a huge bounce. So I feel Monday we might start from a positive note, or at least a mildly positive note. Nasdaq jumped 2.8% and Dow Jones jumped 1%. So all positivity from the US markets for Monday. And VIX has also fallen significantly in the US. Anyways, also guys, अगर आपके कोई questions है तो आप उसे chat में ही post कर सकते हो. Anyways, oil prices have been rising. ये एक second. Oil की futures हैं, so oil prices have jumped a little bit since the last week. That is a cause of concern, and gold has come down at the same time. That's a mixed signal for India. Thankfully, another good thing for India is if you see ये dollar currency index, dollar की value वापस कम हो रही है, and this is a great sign. It has gone below the 200 DMA after a really long run up. So yeah, all positive signals for India. Now let's see the Indian markets a little bit. We'll come to the Nifty 50 index. If I was to take you the Nifty 50 index यहाँ पे, just a second. तो लास्ट 1 वीक में अगर आप लास्ट 1 वीक की कैंडल्स देखो, oh shit. तो लास्ट वीक जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, एंड आई फील लाइक 18,200 के नीचे और 18,000 के ऊपर ही एक्सपायरी रहेगी, और मे बी 17,800 से 18,200 के बीच में एक्सपायरी रहेगी. एंड थिंक द markets will move more than 400 points currently now. And coming to the 5-minute chart, things look bullish only. So Monday I'll be selling puts in the morning and with a tight stop loss, and Tuesday, Thursday as usual I'll be trading the expiries.
एक्सपायरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, आई बी रिकॉर्डिंग वीडियोज़ अबाउट इट, इफ़ यू गो ऑन माई चैनल तो वहाँ पे आपको वीडियोज़ ये मिल जाएंगी. एंड let's discuss some investments now. VBL was available for a steel deal. If you look at the chart of VBL, it is one of the most uh, top performing stocks in the last 1 year. So 1 year, while Nifty gave I think 5 to 8% return, VBL has given about 80% return. Recently, VBL के prices crash हुए थे from 1400 to a little below 1200 एंड यहाँ पे 15-20% डिस्काउंट अवेलेबल था. आई हैव good amount of buying in VBL and I bought more here. Another good company is Heritage Foods. इनका भी अभी शेयर स्प्लिट या एक बोनस कुछ इशू हुआ था, so they are also available at good prices. What I recently like about Heritage Foods, they might not be posting great numbers, but recently what they've started doing is in current market scenarios where most people are losing market share, they're trying to win market share by selling at slightly cheaper prices. So वो जान के अपना profit कम कर रहे हैं, which is quite a smart and a calculated risky move. But they're at the same time gaining market share. So whenever the economy starts improving more, by economy ने I mean broader economy जो इंडिया के देहात रूरल एरियाज हैं, जब यहाँ पे डिमांड वापस बढ़ेगी, because they would have already gathered a lot of market share by then, you'll see a huge performance in their stocks and sales from that time. So I feel supporting Heritage Foods at this time will be a great opportunity. And yeah, that is two. Hanks and Bees are also looking very ripe for investments. And one of the swing trades I might take or which might present an opportunity would be Anantraj had taken a trade but exited somewhere here, but I might re-enter. The only reason I exited because it made a red candle and I didn't want to be stuck in the trade. So I exited on this day because it didn't. If it had closed above 124, then I would have yeah, then I would have stayed in the trade. But because it didn't close at day's high, so I didn't stay in the trade. So yeah, that was the analysis. More or less, I expect the market to be flat. My two major trading days would be Tuesday and Thursday, because for Nifty expiry and Nifty expiry, Nifty की monthly expiry है and usually monthly expiry round number पे close होती है. So 18,000 या 18,100 या 200 is what I feel where the market will expire. More or less, I think the market might be high only. Price तो अब एक ही है, but anyways, if you have any questions and doubts, you can let me know. I'll hang here for a minute or so and then I'll be done. Okay guys, thanks so much for watching. I'll catch you guys later in the week now. Thank you so much.